पहला प्रॉब्लम हमारे पास है what is the magnetic field at the center of a current carrying coil. Whenever you have a moving charge, or current is nothing else but a collection of charges that are moving, ये 100% श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है. तो इफ आई टेक अ करंट कैरिंग कॉइल और यहाँ पे डायरेक्शन बार के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो लेट्स अज्यूम दैट इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, और हियर आई हैव शोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है. तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल के बारे में हम बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द रिवर्स राइट हैंड रूल. व्हाट इज रिवर्स राइट हैंड रूल? राइट हैंड रूल का मतलब क्या है? पहला वो तो है, अगर सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फिर हम लोग we keep our thumb in the direction of the current carrying coil and curl our fingers, और जो curling of the fingers का direction है, that is the direction of magnetic field. Magnetic field will encircle that current carrying conductor like this. But यहाँ पे current is flowing here, so rather than keeping the thumb in the direction of current, we curl our fingers in the sense of the current and thumb points in the direction of magnetic field. इसको बोलते हैं reverse right hand rule. So that means that magnetic field यहाँ पे होगा inside the computer, cross. तो it is directed normal to the plane of the coil, because inside the computer का मतलब है normal to the plane of the coil. तो इसको टिक मार करेंगे. अगर आपने इस डायरेक्शन में करंट कैरिंग कॉइल कंसिडर किया होगा तो finger will point outwards and the magnetic field will be a dot. Okay. Now we go for the second one. There is an electron and that is fired parallel to a uniform electric and uniform magnetic field which are acting simultaneously and in the same direction. So ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसको इस डायरेक्शन में फायर किया होगा. इट इज हैविंग अ वेलोसिटी and there is a electric field in this region. So let's say this is the electric field in this region that is parallel to the direction of this electron that is moving, and there is also a magnetic field in this region. So what will happen to the electron? Will it gain kinetic energy, lose kinetic energy, move along a circular path, or move along a parabolic path? So first we'll try to find out what is the force experienced by this electron due to the magnetic field. The force that is magnetic in nature, that is given by q v bar cross b bar. अभी अगर velocity vector और magnetic field same direction में हो तो angle between them is zero, and therefore this magnetic force experiences zero. तो magnetic field के कारण ये इलेक्ट्रॉन कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस डायरेक्शन में. ओके, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन है इट विल ऑपोजिट द फोर्स ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. That means that it is going to lose the kinetic energy क्योंकि retardation produce हो रहा है. तो I will say that due to retardation, क्योंकि velocity के opposite में अगर force है तो that is retardation. Therefore, it will lose the kinetic energy. So this is the correct option. Then we go for the third one. The magnetic field due to a current element. Current element का मतलब है ideal bar. इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट. ओके, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म इन द बायो-सेवर्ट लॉ in your magnetic effects of electric current. So that is given by mu naught divided by 4 pi ideal bar cross r bar divided by r cube. Okay, this is the formula for the magnetic field in the vector form. This is called as the बायो-सेवर्ट law for the current elements. तो आप देख सकते हैं कि it is dependent on the current, it is dependent upon the distance also, it is dependent upon the length of the current element also. So therefore none of these is the correct option. Fourth problem में जाएंगे. What is the unit of current element? Current element बोलेगा तो ideal bar, that is ampere meter. ओके, एकदम सिंपल. चलो फिफ्थ वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल. ऑफ कोर्स वो करंट कैलकुलेट इट इज कैरिंग इट. सर्कुलर कॉइल इज कैरिंग अ करंट. सो अलोंग द एक्सिस यहाँ पे
at a distance of x from the center of coil. यहाँ पे magnetic field का value कितना है? देखो, this is the magnetic field. We will write here mu naught. देखो, I don't have to write the constants. In fact, यहाँ पे x square plus a square the whole raised to 3/2 आता है. Okay, and all those constants I'll just put it up here. Mu naught ia square divided by 2, x square plus a square the whole raised to 3/2. ये standard formula है for the magnetic field along the axis. But यहाँ पे लिखा गया है it is very far away. Far away का मतलब ये है कि x is very much greater than a. That is the radius of the coil. अगर x is greater than a, I can neglect a here because आप add कर रहे हो, तो x square raised to 3/2, तो 2 cancel होगा, x cube आ जाएगा. So magnetic field is inversely proportional to x raised to -3 आ जाएगा. So that would be the correct answer. 6th वाला में जाएंगे. What is the torque that is acting on a magnetic dipole जिसका magnetic dipole moment है m bar and that is placed in a magnetic field. तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल साथ में आते हैं, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू बी बार. दैट इज हम लोग जैसे फोर्स में लिखते हैं Q इंटू ई, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सिमिलरली दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, Q के जगह पे M, E के जगह पे B, और यहाँ पे साउथ पोल M B बार इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा. So therefore you can see that if this length here is 2 into L, that is the distance between these two, यहाँ पे couple produce हो रहा है because there are two equal and opposite forces which are separated by a lever arm. So you can see that if this angle is theta, then naturally you can say that this angle here will be 90 minus theta. So 2L का जो component है that will be 2L cos of 90 minus theta, that is 2L sin theta. ये component हो गया. So what is the torque produced? Torque produced due to a couple. ये couple के कारण है. Two equal and opposite forces separated by a lever arm. That is equal to the equal force into the perpendicular distance between them. So that is given by B m2L into sin theta. That is equal to mb sin theta because this m2L जो लिखा है that is nothing else but the magnetic dipole moment, and this can be written as m bar cross b bar. देखो वैसे तो इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली लिख सकता था m bar cross b bar, बट मैंने ये इसीलिए दिखाया कि when you are solving competitive problems it is not just memorizing the formula but derivation भी हमें आना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया देन वी शुड बी एबल टू हैंडल इट. अगर डेरिवेशन ही नहीं आता, कंडीशंस नहीं आता, तो थोड़ा सा अगर उन्होंने प्रॉब्लम को चेंज कर दिया वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू. दैट इज व्हाई आई हैव डिराइव्ड इट टू शो यू दैट यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज ऑन द स्पॉट. ऐसे भी हो सकता है कि सडनली आप भूल जाए व्हाट इज द फॉर्मूला, आई डोंट रिमेंबर एट ऑल. सो यू शुड बी एबल टू डिराइव इट ऑन द स्पॉट. और दूसरा है यू कैन ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ analogous nature in electric field and magnetic field. Like आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने प्लेस किया है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क गिवन बाय P bar cross E bar. तो सिमिलरली व्हाट विल बी द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? इट इज M bar cross B bar. That's all. So we tick mark that answer. Okay, so that's another way in which you can solve it fast. The magnetic force field exerts no force on which type of particle here? Magnetic force हम लिखते हैं Q V bar cross B bar. तो अगर velocity 0 हो जाती है, that means if you are having a stationary charge, then there is no question of any magnetic force. So therefore this is the correct answer. The magnetic force will become 0. Then we go for the 8th one. A current carrying coil is placed in a uniform magnetic field like this. This is a current carrying coil. Let's say this is the direction in which the current is flowing with its plane parallel to the magnetic field. So maybe the magnetic field is in this direction. I say plane is parallel to the magnetic field. If the current turns, if the coil is turned to an angle of theta, how the torque and theta will be related? So what is more important to understand that if you look at this coil, it is actually
modeled as a magnetic dipole moment, because देखो this current carrying coil will produce a magnetic field according to the reverse right hand rule which we had done in the first problem. अगर आप ऐसे कर्ल करोगे आपके फिंगर्स को इनसाइड द कंप्यूटर तो मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है. और अभी आपको पता है कि कोई अगर बार मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आते हैं और यहाँ से एंटर होते हैं. तो यू कैन से दिस करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विद नॉर्थ पोल हियर एंड साउथ पोल हियर. तो देखो नॉर्थ पोल जो है दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स लाइक दिस, साउथ पोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स लाइक दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क. एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो टॉर्क है वो तो ऑलरेडी मैंने प्रूव कर दिया था, दैट इज mb sin थीटा. तो वी कैन से द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा. दैट इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे मैंने इस पे फोकस किया कि व्हाई अ करंट कैरिंग कॉइल इज मॉडल्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. देन वी गो फॉर द 9th वन. अ चार्ज इज फायर्ड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो पहला हम लोग इस फॉर्मूला को लिख देते हैं, दैट इज QVB sin of theta. तो when will this force be maximum? When this sin theta is 1. And when will sin theta be 1? When theta is equal to pi by 2. Therefore, this is the correct answer. This value will be maximum when the angle between, that means इसलिए हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को, और यहाँ पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल अंदर जा रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर, इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स एंड विल अंडरगो सर्कुलर मोशन. ओके, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम करते हैं. फिर हम जाएंगे 10th वाले में. द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम. देखो जस्ट लाइक a charge particle experiences magnetic force, similarly even a current carrying conductor experiences a force. जैसे हम लोग लिखते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए q v bar क्रॉस b bar, उसी तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लिखते हैं I L bar क्रॉस b bar. Okay, so when will the force on the current carrying conductor be maximum? When the angle between the current carrying conductor and the magnetic field will be pi by 2. Again same thing, because ये जो वैल्यू है this will be ILB sin theta, and this value will be maximum when sin theta equal to 1, and that will happen when the angle is pi by 2. So we click mark this. Okay, so in the next session we'll continue with problems on magnetic field of electric current, okay, from 11 to 20. So see you back again once again. Thank you so much for watching.